Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. Now let's solve practice set 2.1. First example, write any two quadratic equations. हमें कोई भी दो quadratic equations लिखना है. Okay. What we should write? The equation in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. Then and then only it is a quadratic equation. ये तो concept पता है, right? तो हम लिखते हैं any two quadratic equations. Okay. ax square plus bx plus c is equals to 0. I will write so 5x square plus 6x plus 7 is equals to 0. It is a quadratic equation, right? So let's change variable. Instead of x, we'll take variable as m. So we'll write 2m square minus 3m plus 8 is equals to 0. Correct? जो मन में आएगा लिखना है, but it is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. ये याद रखना है. Okay? There must be a term with x square. There must be a term with x. There must be a term with simple number is equals to 0. Then it is called as quadratic equation. Okay? बहुत easy था. चलो चलते हैं second example के लिए. Decide which of the following are quadratic equation. हमें कुछ equations दिए हैं. We have to find out whether they are quadratic equations or not. First, x square plus 5x minus 2 is equals to 0. It is already in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. Then it is a quadratic equation. I will directly write here. It is a quadratic equation. Or you can add one more sentence. It is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. Therefore, it is a quadratic equation. एक sentence आप add करना चाहो तो कर सकते हो. y square is equals to 5y minus 10. मैं क्या करता हूं यहाँ पे? I will take this 5y minus 10 on left hand side. So 5y will become minus 5y. Minus 10 will become plus 10 is equals to 0. Now it is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0. So it is a quadratic equation. Right? It is a quadratic equation. Easy है ना? Third example. Y square is equals to 1 upon y is equal. Y square plus 1 upon y is equals to 2. यहाँ पे y square तो आपको दिख रहा है, but there is 1 upon y, right? 1 upon y means what? We have to multiply by y to get rid of this denominator y, right? So I'll say multiply by y. Multiply by y. Y into y square will be y cube. 1 upon y into y. 1 upon y into y. Y will get cancelled. So क्या मिलेगा आपको? 1 is equals to 2 into y is 2y. So y cube minus 2y plus 1 is equals to 0. Now what I want? We want y square. But क्या है अपने पास? Y cube. Sorry. हमारे पास क्या है यहाँ पे? y cube आया है, right? Now we don't require this y cube. हमें चाहिए था y square. Correct? तो ये quadratic equation है क्या? नहीं, right? So what we'll write? It is not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं है. कंसेप्ट समझ में आ रही है? नेक्स्ट, x प्लस 1 अपॉन एक्स. अगेन 1 अपॉन एक्स है तो मल्टीप्लाई करूं x से, जैसे यहां पे किया था. तो विल से मल्टीप्लाई बाय x. लेट्स मल्टीप्लाई बाय x. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर. x इंटू 1 अपॉन एक्स, x इंटू 1 अपॉन एक्स. x विल गेट कैंसिल अगेन. क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2. माइनस 2 को लेफ्ट ले लेते हैं. x square plus 2, sorry, minus 2 into x is minus 2x. So minus 2x will be plus 2x plus 1 is equals to 0.
Now I got ax square plus bx plus c is equals to 0. So what we'll write our answer? It is a quadratic equation. ये quadratic equation है. Understood? Easy है, right? चलते एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ. m प्लस 2 m माइनस 5 0. क्या करोगे यहाँ पे? यस, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो m इंटू एम माइनस 5 प्लस 2 इंटू अगेन m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, है ना? m इंटू एम माइनस 5 m स्क्वायर माइनस 5m. 2 इंटू एम माइनस 5 2m माइनस 10 is equals to 0. So m square minus 5m plus 2m is minus 3m minus 10 is equals to 0. तो आ गया मेरे पास m square. तो क्या लिखूं मैं? It is in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0, है ना? तो क्या लिखेंगे? It is a quadratic equation. ये भी quadratic equation है. Quadratic equation. Okay. M cube is plus 3m square minus 2 is equals to 3m cube. I will take this 3m cube on left hand side. So m cube minus 3m cube plus 3m square minus 2 is equals to 0. ऐसे हो गया. M cube minus 3m cube will be minus 2m cube because 1m cube minus 3. 1 minus 3 is minus 2 plus 3m square माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. अभी अपने पास क्या आ गया? m क्यूब. जैसे यहां पे आया था y क्यूब, तो y क्यूब आया था. तो वी हैड नॉट टेकन दिस एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर. हमें चाहिए स्क्वायर टर्म चाहिए, हमें क्यूब टर्म नहीं चाहिए. तो m क्यूब यहां पे आ गया. इट इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर इट इज not a quadratic equation. जो भी इक्वेशन हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे ही हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बाकी किसी को नहीं कहेंगे. आ रही है कंसेप्ट समझ में? ये था अपना एग्जांपल नंबर 2. Thank you for watching Top Maths.